Okay, now for all the students, who are doing listening, they are doing practice. You might not know, students, that there have been small changes in the listening test. So these small changes are this ones. These small changes have been from 4th January 2020. मतलब एक साल पहले change हो गए थे. But these are very minor changes. इससे आपके listening की practice में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. थोड़ा सा ये है. The first change is that word sections was changed to parts. So instead of sections in the listening examination that you will be having in the real exam, they won't be speaking sections. They are always going to say parts. So for example, in IELTS you have got 4 sections, isn't it? So instead of sections they are going to say parts. Number 1. दूसरा जो चेंज आया है वो ये है कि जो पहला सेक्शन होता है उसके पहले एक एग्जाम्पल दिया जाता है. देयर इज एन एग्जाम्पल गिवन टू यू. एवरीबॉडी प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. बहुत छोटे से चेंजेस है. उससे आपकी प्रैक्टिस पे ना कोई फर्क पड़ेगा, ना उसकी आपकी स्ट्रेटेजी पे कोई फर्क पड़ेगा. बट स्टिल बिकॉज द चेंजेस हैव कम, आई थॉट इट नेसेसरी टू टू शेयर विथ यू. तो पहला जो चेंज था वो ये है कि इंस्टेड ऑफ सेक्शंस दे आर गोइंग टू स्पीक पार्ट्स. तो आपको वहां पे एग्जाम में ऐसा ना लगे कि सर ये पार्ट्स क्यों बोल रहे हैं सेक्शंस के बदले, तो पार्ट्स ही बोलेंगे. And second most important part is that the example which is always given before the beginning of first section, आपको शायद पता होगा example दिया जाता है, वो example अब नहीं दिया जाएगा. And they have also removed the page number references. मतलब कि page number 4, page number 5, now turn on to page number 5, page number 6, ऐसा नहीं होगा. So these are 3 minor changes that have come in the real examination. जो लोग को पता नहीं है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो देयर इज नथिंग टू वरी, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस. ओके, ग्रेट. नाउ let's get started with the listening part. I am going to start with the listening part. So I want you people to start with the listening. Get started. इसमें मैं आपको समझाऊंगा. This is a listening which have been asked in the real examination, and I am going to teach you today in this listening how you can predict your answer. आप आंसर आने से पहले कैसे इसको predict कर सकते हो. So this will definitely help you out in the real examinations. Let me get started now. Yeah, can you see the voice? Can you listen to the voice? Cambridge IELTS 2. Everybody? By the University of Cambridge Local Examination Syndicate. Published by Cambridge University Press, 2000. This recording is copyright. Cassette 1. Side 1. Test 1. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. Write all your answers in the listening question booklet. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. Louise wants to join a video library. You will hear a conversation between Louise and the owner of the video. Okay, I hope the voice is clear to you, everybody. Okay, great. Just a minute. Cambridge Practice Tests for IELTS 1 by Vanessa Jakeman and Claire McDowell. Published by Cambridge University Press, 1996. This recording is copyright. And how does it close? It's got buckles at the front. D. Best fits what you hear on the tape and circle the appropriate letter. Okay. Now, students, first and the foremost thing, I am going to teach in this session how you can predict the answer. For example, the discussion that they do, and from the discussion that you will listen, you can always predict the answer, and this will definitely help you out in getting the answers right. Let us see. It will start, don't worry. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to the example will be played first.
Good evening, City Police Station. Can I help you? Oh, hello. I'd like to report a stolen briefcase, please. Just a minute and I'll put you through. The woman says she wants to report a stolen briefcase. So A has been circled. I hope this is clear. The example is clear. Woman wanted to report her stolen briefcase. उसका briefcase शायद चोरी हो गया था. So she dialed a police station and she reported a stolen briefcase. Okay, let us get started now. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Now listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 1 to 5. Good evening, City Police Station. Can I help you? Oh, hello. I'd like to report a stolen briefcase, please. Just a minute and I'll put you through. Lost property, can I help you? Oh, yes. I've had my briefcase stolen. Okay, I'll take some details. Tell me what it looks like, first of all. Well, it's a soft leather one, not a heavy box type like a man's. Okay, fine. Now this is where what you need to understand. Question ये है कि what does a briefcase look like? And you can see there are 4 pictures being given in front of you. और उसने ऐसा बोला कि it is a soft leather one, not a heavy box type like a man. It is a soft leather one, not a heavy box type like a man. ऐसा बोलने से मेरे कौन से 2 ऑप्शंस चले जाएंगे? Can you tell me which options will move away? It's a soft leather one, not a heavy box type like a man. Is it getting clear? Everybody, I want you to understand this. तो जाहिर है कि box type like a man मतलब B और D options चले जाएंगे. Is it getting clear? So B and D options are going to go away. Now the options that are remaining in front of me are A and C. What is the difference between A and C, students? What is the difference between A and C? As you can see in A, आप शायद लिखने में देर लगेगा. In A there are 2 buckles. There are 2 buckles. नहीं. दोनों में फर्क ये है कि A में 2 buckles है और C में 1 buckle है. उसके अलावा there is no other thing that differentiates A and C, isn't it? In A there are 2 buckles and in C there is 1 buckle. So this is the only thing that differentiates A and C. तो इसका मतलब ये हुआ कि now my conversation is definitely going to be about the buckles and they are going to speak about 1 buckle or 2 buckles. ऐसा पहले से सोचने से हमारा काम आसान हो जाता है and you cannot miss the answers. So ये prediction कहते हैं इसको. Before the answer comes, I am predicting what probably they are going to speak, which in this case it's going to be about buckles, either 1 or 2. Let us see. And how does it close? It's got buckles at the front, 2 of them. Is it getting clear? It has got buckles at the front, 2 of them. इसका मतलब ये हुआ my answer is going to be A. Important ये नहीं था कि आंसर क्या है. Important ये था कि मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि what probably could be the answer. This is very very important. आप जब भी लिसनिंग करते हो जितना प्रेडिक्शन अच्छी तरह से करोगे from the options from the information provided by them, आपका काम उतना ही आसान हो जाएगा. Let us try to check out with the next one. What picture shows the distinguishing? Which picture shows the distinguishing features? तो A, B, C, D में से है. Let us see how it works. They're gold-plated ones. Fine. Was it locked? No, I'm afraid not. Never mind. Any distinguishing features? Pardon? Any marks or badges on it that make it stand out? Only the brand name. And where's that? It's on the back, at the bottom, in the left-hand corner. In the bottom, in the left-hand corner. In the bottom, in the left-hand corner. That is very, very important for you to understand. Bottom left-hand corner में इसका मतलब ये हुआ कि left-hand corner में कौन सा है देखो तो कौन से options 2 चले जाएंगे? Which 2 options are going to go away, students? Left-hand corner. मतलब कि left-hand corner में है. Is it getting clear? So which are the options which are going to go away? B and D, because that is in right-hand corner. Bottom right. आपको ये देखना है कि मैं सामने खड़ा हूं तो वो कौन सा होगा? So answer is going to be A और C के बीच में होगा. Now what is the difference between A and C? A और C में क्या है? What is the difference between? As you can see A, तो A में क्या है कि जो स्क्रैच है exactly सैगी के सामने है और C में स्क्रैच जो है वो सैगी के ऊपर है. So that means my conversation, the conversation that might come is going to be regarding the scratch, the position of the scratch mark on the bag.
अगर कोई है वो या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड है या तो फिर ऊपर है. लेट अस सी. It's saggy. Oh, and there's a scratch. It's quite bad, but small, directly above the brand name. क्या बोला उन्होंने? Directly above the brand name. Is it getting clear? So answer of this is going to be C. Understood students? You are basically making, आप आंसर आता है उसके पहले ही प्रेडिक्शन कर रहे हो कि क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला there is a scratch which is directly above the brand name. Understood? Okay, let's go ahead now. I did it recently, putting it on my bike. I've got that. Question number 3. What did she have inside her briefcase? उसके पास क्या है briefcase में? Let us see. So, what did you have inside the briefcase? Well, all my papers from college. उन्होंने ऐसा बोला कि क्या है आपके ब्रीफकेस में, तो उसने ऐसा बोला कि ऑल द पेपर्स फ्रॉम कॉलेज. अब पेपर्स देखो कौन से ऑप्शन में है, पेपर्स कौन से ऑप्शन में है, ए, बी और डी. पेपर्स जो उन्होंने बोला वो ऑप्शन है, फटाफट आंसर दो आप लोग. बी एंड डी, इजंट इट? एग्जैक्टली, बी और डी में है. और इसका मतलब ये हुआ कि नाउ ए और सी इज नेवर गोइंग टू बी माय आंसर. ईदर माय आंसर इज गोइंग टू बी बी और डी. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके. द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि फॉर एग्जांपल अब बी और डी में क्या फर्क है, बी में वॉलेट भी है और डी में पेन्स एंड नॉवेल है. तो जाहिर है मेरा जो ऑप्शन होगा, द आंसर, द कन्वर्शन दैट माइट टेक प्लेस इज गोइंग टू बी बिटवीन वॉलेट, पेन्स एंड नॉवेल. लेट्स सी. It's so frustrating, but thank goodness for computers. I haven't lost them completely. Yes, you're lucky. I had my wallet in my pocket, so I didn't lose that. चलिए क्या आंसर आएगा? What is the answer going to come? डी के. उन्होंने तो ऐसा बोला, वॉलेट बोला. They spoke about wallet. ओके, उन्होंने ऐसा बोला, नहीं ऐसा नहीं. वॉलेट से उनके आई हैड द वॉलेट इन माई पॉकेट सो आई डिडंट लूज देम. वॉलेट तो मेरे खीसे में था, मेरे पॉकेट में था, तो वो नहीं मैं गवाया मैंने. तो वॉलेट तो नहीं आएगा आंसर, बिकॉज वॉलेट तो उसके पास था, तो वो नहीं गवाया उसने. दैट मीन्स द आंसर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी डी. डी इज गोइंग टू बी माई राइट आंसर. लेट अस सी. But there were also my pens, which I got for my birthday, and a novel I was planning to read on the train. Right. Exactly. So answer is going to be D. Understood, students? चलिए आगे बढ़ते हैं. Where exactly did you lose the briefcase? Well, I couldn't believe it. I was standing on the platform. I was standing on the platform. कौन से दो ऑप्शन चले जाएंगे? Which two options will go away? Everybody? I was standing on the platform. कौन से दो ऑप्शन चले जाएंगे? B और C चले जाएंगे? Yes or no? Everybody? Very good. Okay. अब देखो A और D में क्या फर्क है? What is the difference between A and D? Look at the picture. A and D में क्या फर्क है? A में ट्रेन आपके सामने खड़ी है. A में ट्रेन आपके सामने खड़ी है और D में आप ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हो. You are waiting for the train. You are looking out for the train, isn't it? So that means now my conversation is going to be whether the train was there exactly when I was standing or I was waiting for the train to come. तो ये पहले से आपने सोच लिया तो आपका काम आसान हो जाता है. It was right next to me. You were holding it? I just put it down on the floor, but I could almost feel it beside me. I was watching for my train because sometimes... Yes, I was watching for my train. मैं ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था. Is it getting clear? So answer of this is going to be D. D is going to be the right answer. Exactly. Understood. चलिए आगे बढ़ेंगे. It comes early, and then next time I looked, my briefcase wasn't there. And what time was this? It must have been about 5:20. No, a bit later. I'd say 5:30 because it was just getting crowded and the train normally comes at about 25 to 6. Yes, पहले क्या बोला उन्होंने? What is the answer? पहले ऐसा बोला कि it was basically, I believe it must have been 5:20, लेकिन बाद में ऐसा बोला no, it was basically 5:30 and usually train comes 25 to 25 मिनट पहले आती है, 6 बजे से पहले. So answer of this is going to be C. Understood students? Yes or no? Everybody? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू नीड टू प्रेडिक्ट द आंसर्स. जितने प्रेडिक्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट द आंसर्स. और ये छोटी सी चीजें हैं बट प्रेडिक्शन से बहुत काम लगता है. चलिए, shall we do more practice of listening now? Everybody? Okay, great. चलिए.
Cambridge IELTS 2. चलिए. Section 2. You will hear a radio interview about an expedition across the Atura Mountains. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Okay. Now this listening is very very difficult, students, and I want you people to understand कि इसको कैसे करना है. पहले है questions number 11, 12 and 13 in which you are supposed to write not more than 3 words. Now you can see exactly that there is a conversation being taking place between two persons. One is a radio reporter and second one is Charles Owen. And you need to give answers of question number 11, 12 and 13. यहाँ पे keywords पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है. In the 11th one, the keyword is prepared a. In the 12th, you are looking for total length of the trip. And in 13th, you are supposed to write about the climbed highest peak in. Very, very important for you to understand. Yeah. So let me see how this is done. एक 11, 12, 13 करेंगे तो बहुत मजा आएगा. And then we'll do multiple choice questions. काफी बच्चे ऐसे कहते हैं sir, I am facing lots of problems in multiple choice questions. So we'll also do multiple choice questions and this will definitely clear out all your doubts. Let's do it first. Don't go away. इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेने वाला हूं मैं आज. Please don't run away. Now listen carefully to the interview and answer questions 11 to 15. A dream came true in 1995 when, over 96 days of the spring and summer, an expedition of 4 men undertook what they believed to have been the first and only complete end-to-end crossing of Morocco's Atura Mountains. I talked to Charles Owen. Okay, usually क्या होता है कि when you get started, lots of conversation takes place and you are still looking for the answer. आप बोलते हो कि सर मेरा आंसर क्यों नहीं है, तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो कीवर्ड है चार्ल्स अवन, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि चार्ल्स अवन आता है उसके बाद ही आंसर आएगा. So you don't need to worry if they have spoken lots and lots of things and still your answer is not coming. You only need to concentrate on Charles Owen because you should know that only after they have spoken Charles Owen are you going to expect answers of question number 11, 12 and 13. जैसे कि यहाँ पे Charles Owen बोला. Now other important thing that I would like to tell you is that answers are always going to come in sequential order. तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये कीवर्ड यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है. Very very important because now your answers are going to be you are going to find out with the help of keywords. Prepared है तो उसके synonyms भी इस्तेमाल कर सकते हो. Made, prepared, formulated वगैरह वगैरह वगैरह. Let's see. The leader of the expedition group about the trip. Charles, how much planning went on beforehand? ऐसा पूछा उस लड़की ने कि Charles, how much planning went on beforehand? आपने ये जो अटोरा माउंटेन में एक्सपीडिशन किया था उसके पहले आपने कितना प्लानिंग किया था? Well, as you know, I run these walking trips across the mountains for tourists, and over the years I've collected maps and other data to prepare what I call a route book for this trip. Yes, what is the answer of 11th one? What is the answer of 11th one? No. Very good. Answer of this is going to be route book. इसका आंसर जो होगा is going to be route book for so answer of this is going to be route book. अब important ये है कि इसका आंसर का स्पेलिंग सही होना बहुत जरूरी है. You are going to write answers in capitals और आंसर होगा route का स्पेलिंग होगा ROUTE. Don't write ROOT or else you are going to be marked as a wrong answer. और book लिखना भी जरूरी है. So you are going to write answer as route book. Okay. And this book basically shows the route across the mountains that we took. You actually broke records while you were out there, didn't you? Yes, it was 900 miles in total. It was 900 miles in total. इसका मतलब ये हुआ कि 12th का आंसर जो होगा it's going to be 900 miles. अब MILES लिखना बहुत जरूरी है. 900 सिर्फ आपने लिखा, answer is going to be marked as a wrong answer. So you need to write 900 miles completely. Very very important. Clear? और miles आप capital में लिखोगे तो बेहतर रहेगा. Understood? Okay. Now let me see who gets me the answer of 900 miles is also fine. आप words में लिखोगे तो भी चलेगा, but बेहतर है कि you should not be writing. Don't why should you
give more hardship to you. So you know yourself. So बेहतर है कि 900 miles लिखे, numeric में लिखोगे तो चलेगा. Climbed highest peak in. Let me see who gets the right And answer. we managed to climb 32 peaks that were over 3,000 meters high, including Tube Carl, which is... Yes, आ गया आंसर. या आंसर आ गया 13th का. नो, आंसर इज रॉन्ग. आप जब आंसर कर लिखते हो तो आपको देखना पड़ेगा. Still the answer has not come. You need to understand that, you know, if I put 3,000 miles over here, 3,000 feet over here, so is it going to be grammatically correct? Can I say climbed highest peak in 3,000 miles or 3,000 feet? ऐसा मैं बोल सकता हूँ. So when you put the answer, you need to make sure that it is grammatically correct. और आपका 3,000 है या जो भी है, it is not grammatically correct. So answer has still not come. Okay. Of course, the highest in North Africa. Yeah. Of course, the highest in North Africa. So answer of 13th is going to be North Africa. पूरा होना जरूरी है और answer is going to be otherwise going to be marked as a wrong answer. Clear? Okay. So answer is going to be North Africa. Now, everybody please concentrate over here. I am now going to do multiple choice questions which is very very difficult. जब भी multiple choice questions आता है तो सबसे पहले important चीज है कि you need to read all the things. Not only are you supposed to read the question, but at the same time you should also read the options. अगर आपने options ठीक से read नहीं किए, let me tell you the multiple choice questions are going to be, you are going to find it very very difficult. I am reading question number 14 and 15 for you. What took the group by surprise? A, the amount of rain. B, the number of possible routes. C, the length of the journey. ऐसी कौन सी चीज से ग्रुप आश्चर्यचकित हो गया था? नंबर ए, अमाउंट ऑफ रेन, नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स, बहुत सारे रूट्स उनको चेंज करने पड़ते थे. एंड सी, द लेंथ ऑफ द जर्नी. 15th, हाउ डिड चार्ल्स फील अबाउट हैविंग टू चेंज रूट्स? उसको बार बार रूट्स चेंज करने पड़ रहे थे, तो उसके लिए उसके मन में क्या प्रतिक्रिया थी? तो ए, he reluctantly accepted it. Reluctantly मतलब unwillingly. He was not willing to accept the changing routes, but he had to accept it. He was irritated by the diversion. उससे गुस्सा आ जाता था उसको diversion से. And number C, it made no difference in to his enjoyment. उसके enjoyment में कोई फर्क नहीं पड़ा. So अगर आपने ये चीज पहले से read नहीं की है, let me tell you, it's difficult to get the answers right. So I'm doing question number 14 and 15 together. We weren't actually out to make a name for ourselves. It just happened, really. What was the weather like? Oh, it got us right from day one. And we were pretty taken aback, really, to find that it rained on quite a number of days. We were pretty taken aback. Pretty taken aback का मतलब होता है कि मैं उससे सरप्राइज हो गया था by the amount of rain. See, you can understand कि उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला, सरप्राइज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. What took the group by surprise? तो इसलिए उन्होंने ये शब्द किया, we were pretty taken aback. Taken aback का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना. तो whenever you are reading it, you also need to look out for synonyms. तो उन्होंने ऐसा बोला कि we were pretty taken aback by the amount of rain. So answer of 14 is going to be A. Okay. And so we were forced to start replanning our route almost from the outset. One of the obvious problems is the heavy snow which blocks the mountain passes. So you have to make considerable detours. When we were on the way to Imilchil, for example, the snow forced us into a northern bypass, which was new to us. But anyway, either way, we would have been rewarded because, well, we fell upon amazing high meadows, huge gorges, and wonderful snow-capped mountains. The scenery was as fine as any we saw on the trip, and that was how it was every time. Having to take another pass was never a disappointment. What is the answer? What is the answer? Everybody. उसको बार बार रूट्स चेंज करने पड़ रहे थे. He had to change the routes lots and lots of time. लेकिन उसको बार बार रूट चेंज करने पे भी ऐसा था कि इतनी सुंदर सीनरीज देखने को मिलती थी कि उसके एंजॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा. So answer of 15 is going to be C. Understood? Is it getting clear? इसके बावजूद कि उनको वापस डिटूर करना पड़ा, बहुत सारे रूट्स को चेंज करना पड़ा, लेकिन हर बार नए रूट्स में नई चीजों को देखने को मिलता था, तो उसी के कारण आंसर इज गोइंग टू बी सी. अंडरस्टूड? नाउ लुक एट क्वेश्चंस नंबर 16 to 18. 16 to 18. I hope you people are enjoying the listening. Yes or no? Okay, great. Let's see.
Okay, I am reading questions number 16 to 18. Kindly pay concentration over here. यहाँ पे ध्यान रखिए. What does Charles say about his friends? Charles अपने दोस्तों के बारे में क्या बोल रहा है? He met them at one stage on the trip. B. They kept all their meeting arrangements. C. One of them helped arrange the transport. एक ने transportation के लिए मदद की थी. D. One of them owned the hotel they stayed in. एक बंदे की खुद की होटल थी, उसका मालिक था. E. Some of them traveled with him. काफी लोगों ने उसके साथ ट्रैवल किया था. Only one group lasted the 96 days. इतने सारे फ्रेंड्स में सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा था जो उसके साथ 96 डेज तक चला. आपको तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, 16, 17, 18, नॉट नेसेसरली इन एनी ऑर्डर. ए बी ए टू एफ में से आपको तीन ऑप्शंस ढूंढने हैं. यू नीड टू लुक आउट फॉर 3 ऑप्शंस एग्जैक्टली. ओके, जस्ट ओके, लेट अस सी. You now have some time to look at questions 16 to 20. ध्यान रखना. Now listen to the rest of the interview and answer questions 16 to 20. It was in many ways a social trip, wasn't it? Yes, yes. We'd arranged to meet up with friends at various points on the journey. I mean, this was actually one of the purposes of the trip. And we managed to keep all these dates. We managed to keep all these dates. एक पर्पस ये था कि हम लोग मीटिंग करेंगे. And we managed to keep all these dates. मैं सबको ये कहना चाहूंगा, all of you please pay attention here. मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल ए टू एफ ऑप्शन है. पहले इतना सोचना जरूरी है, ए टू एफ है. द आंसर्स आर गोइंग टू कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो. तीन ऑप्शन आपको निकालना है, तो जाहिर है कि डी के नीचे तो ऑप्शन होगा ही नहीं पहले का, क्योंकि तीन ऑप्शन तो वैसे भी है. सो यू कैन नॉट गेट आंसर्स फ्रॉम डी ई एफ. पहला जो आंसर होगा वो ए बी सी डी में से ही होगा. ई और एफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ई और एफ होगा और आंसर बाद में सीक्वेंस में आता है, आपको पता है, तो देन द आंसर ऑफ दूसरे और तीसरे का आंसर ए और ई बी नहीं हो सकता, वरना सीक्वेंस टूट जाता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि तीन ऑप्शंस ढूंढने हैं, तो जाहिर है ए बी सी में से कोई एक आएगा. जनरली ऐसा नहीं होता कि डी ई एफ ऑप्शंस होते हैं. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी एनी हाउ बी. तो पहले का जो आंसर होगा 16 इज गोइंग टू बी बी. नाउ यू आर लुकिंग फॉर 2 more options. Which, well, it's amazing really, considering the detours we made. An old friend acted as a sort of transport organizer for... An old friend acted as a transport organizer. An old friend acted as a transport organizer. तो कौन सा आंसर आएगा? Answer of this is going to be C. Very good. Answer of this is going to be C. कोई टेंशन नहीं है, शांति से देखो, शांति से क्लियर करो. C is going to be the right answer. Clear? Okay, great, very good. चलिए आगे बढ़ेंगे. Now one more option is still there. एक ऑप्शन बाकी है. everyone, and the Hotel Alley in Marrakesh was a good social base. I'd really recommend it, although I can't remember who runs it. Anyway, groups of friends actually joined us for 3-week stints, and others just linked up with us. Some, whom we hadn't met before the trip at all, tagged on for short bursts, people from the area who just came along for the ride. But outside the major visitor areas like Toubkal, we only met one other group of travellers like ourselves in the whole 96 days. Were there any... Very good. So answer of this is going to be 96. सीधा ही आंसर 96 लिखा हुआ है. और आपको पता चल जाना चाहिए कि क्योंकि आपका आंसर सी है, तो आपके जो बाकी का जो एक ऑप्शन है वो डी ई एफ में से ही आएगा. सो आपके कंसंट्रेशन डी एफ पे ही करना है. तो 96 इज द राइट आंसर. उन्होंने 96 बोला है. सो द आंसर ऑफ 16 to 18 इज बी सी एफ. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बी सी एफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, now questions number 19 and 20. Let's see. 19 and 20, I'm reading it in front of you. What does Charles, आपको दो ऑप्शन निकालने हैं. What does Charles say about the donkeys?
चार्ल्स उसके साथ 2 डोंकीज को ले गया था, तो उसके बारे में 2 चीजें वो कह रहा है. ए, he rode them when he was tired, वो थक गया था तब उस पे सवारी की थी. he named them after places, डोंकीज का नाम वहां पे जो जगह थी उस पे ऊपर से रखा था. one of them died, एक मर गया बेचारा. they behaved unpredictably, डोंकीज अनप्रेडिक्टेबली बिहेव कर रहे थे. एंड ई, दे वेर वेरी स्मॉल. इसमें से एक ही ऐसा वर्ड है जो शायद आपको दिक्कत दे सके, एंड दैट इज अनप्रेडिक्टेबल. कैन यू टेल मी द सिनोनिम ऑफ अनप्रेडिक्टेबल दैट कुड कम इन द रियल एग्जामिनेशन? व्हाट पॉसिबल कुड बी द वर्ड अनप्रेडिक्टेबल के कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जो शायद वो बयां कर सकते हैं? बाकी के सब ऑप्शंस तो सिंपल है. वेरी गुड. अनएक्सपेक्टेडली कर सकते हैं, अनसर्टन है, आउट ऑफ कैरेक्टर है, शॉकिंगली वगैरह वगैरह वगैरह. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. क्लियर? ओके. सरप्राइजिंगली. वेरी गुड. लेट्स सी. Bad moments? Well, we took 2, I must say, long-suffering donkeys with us to help transport water and tents and things. I suppose if we were to do it all again, we'd probably hire donkeys along the way. Taza and Tamri, as we called them, after the last places in the... Taza and Tamri, after we call them after the last places. Keywords bhi kafi aaye hai. Yes, what is the answer of this one? Very good. Answer is going to be B. B for Bombay. Understood? Very good. Okay, now let us see what is the answer. अब एक बाकी रहा. अब एक आंसर है तो जाहिर है वो सी, डी और ई में से ही आएगा. आपको ए और बी में देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आंसर्स आर गोइंग टू कम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. तो आपको सी, डी और ई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ए बी में ध्यान मत रखिए. Trip. Well, they made quite a unique journey between them, and, well, but it was continuously demanding for them. On both the really high summits, they took diversions that were quite out of character, and I can only assume that... They took diversions which were quite out of character. उन्होंने diversions ऐसे लिए जो quite out of character थे. तो quite out of character का मतलब होता है they behaved unpredictably. So answer is going to be D for Delhi. Understood or not, everybody? B or D answer आएंगे. Clear? Any questions, any doubts, students? Do you want me to continue with the listening part? Yes or no? ग्रेट. एंजॉइंग लिसनिंग. ग्रेट. चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ा बहुत मजा आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू डायरेक्टली गो ऑन क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 3. डायरेक्टली आ जाता हूं. चलिए. Talking about their university study. ओके, यहाँ पे टेबल है. इन क्वेश्चंस नंबर 21 to 25 you will find out a table. Can you see a table? So in table, there are questions number 21, 22, 23, 24 and 25. Now you don't need to only concentrate on the on 21. You can also concentrate on something which is written besides the besides this column. For example, if you are looking for answer 21, तो आपको पता चल जाना चाहिए. पहले तो ये देखो, write no more than 3 words. तो उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका कोई भी आंसर 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नंबर 1, डे ऑफ अराइवल टीम का संडे है और जेन का आपको ढूंढना है. तो जाहिर है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन संडे टू सैटरडे. यू आर एक्सपेक्टिंग अ डे, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट अ मंथ. तो अगर टीम में संडे है तो जाहिर है जेन में भी संडे टू सैटरडे होगा. नंबर 1. 22nd में अगर सब्जेक्ट टीम का हिस्ट्री है तो जेन का भी कोई सब्जेक्ट ही हो सकता है, शायद ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह. In question number 23 and 24, you are expecting the answer to come in numbers, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है कि number of books to read. तो you are expecting a number, और आपको number words में लिखने की जरूरत नहीं. You can write number directly in numbers only. जैसे कि अगर 45 है तो आप 4, 5, 45 लिखोगे. Again, in question number 25, यहाँ पे लिखा है day of first lecture टीम का है Tuesday, तो जाहिर है जेन का जो होगा वो भी कोई डे ही होगा. Now यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू आइडेंटिफाई गर्ल एंड बॉयज वॉइस. तो पहला कॉल आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जो पहला कॉल देगा, जैसे कि यहाँ पे तो आसान है शायद कि टीम इज बेसिकली अ बॉय एंड जेन इज अ गर्ल, बट एट नंबर ऑफ ओकेशंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु इज अ गर्ल एंड हु इज अ बॉय. यहाँ पे तो पता चल जाता है इंडिया में, लेकिन ओवर देयर इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो ऐसे केस में ट्राई टू रिकॉल हु हैज कॉल्ड फर्स्ट. तो अगर लड़की पहले बोलती है हाई टीम, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो खुद जेन हुई एंड द गाय इज टीम. वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, यहाँ पे मैंने पहले भी समझाया था, आई रिपीट, आई एक्सप्लेन बिफोर दैट एज वेल,
दैट यहाँ पे कैसा होता है कि संडे है, से फॉर एग्जांपल संडे है, टीम संडे, तो बोले टीम कब तू आया था, संडे को, तो जेन तू कब आई थी, तो वो कह सकती है कि द डे बिफोर, द डे आफ्टर, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि शायद वो नंबर ना बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज, या हिमा, आई विल बी गिविंग यू आंसर्स ऑफ दिस वन, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. ओके, तो अगर वो टीम बोलेगी, टीम बोलेगा कि मैं संडे पे आया, जेन पूछती है टीम को तू कब आया था संडे को, तो शायद टीम पूछेगा जेन को कि तू कब आई थी, तो वो कह सकती है कि द डे बिफोर. शायद ऐसा ना बोले कि मंडे या ट्यूसडे, लेकिन डे बिफोर, तो इसका मतलब आपको समझना जाना पड़ेगा कि डे बिफोर मतलब संडे के डे बिफोर मतलब सैटरडे, द डे आफ्टर मतलब संडे के बाद मतलब इट इज गोइंग टू बी मंडे. सो दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. लेट अस डू इट, you will be getting more clear. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully to the discussion and answer questions 21 to 25. Hi, Tim. Jane, How are you? fine. लड़की ने क्या बोला था, हाई टीम. इज इट गेटिंग क्लियर? तो वैसे तो उस लड़के ने भी बोला कि हाई जेन, बट ये पहला कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर ध्यान रखना जरा. I've been wondering when I'd run into you. Have you been here long? I arrived yesterday on Sunday. How about you? I got here a few days ago, on Saturday. No, wait a minute. What's today? Sorry, Friday, not... 21 का आंसर क्या आएगा? यस एवरीबॉडी, फटाफट बोलो. फ्राइडे, पहले उसने बोला था सैटरडे और बाद में उसने बोला फ्राइडे. इजंट इट एवरीबॉडी? पहले क्या बोला था? सैटरडे. सो आंसर इज गोइंग टू बी फ्राइडे. ओके ग्रेट. सो आंसर इज, और फ्राइडे पूरा लिखना पड़ेगा, डोंट राइट ओनली FRI. काफी लोगों ने FRI लिखा है चैट बॉक्स में, तो ज्यादा याद रखना है कि फ्राइडे पूरा होना जरूरी है. ओके. Saturday. But we didn't have to be here. Now I want answers of 22nd. Let us see who gets it right. 22nd थोड़ा सा tricky है. Let us see who gets it right. Till today. Yes, I know. But I wanted to get my things moved into my room and just take a look around. So, did you decide to do English in the end? No, I changed my mind and opted for history instead. Oh. And you're doing biology, if I remember correctly. Yes, although to start with, I couldn't decide between that and geography. How much? चलिए 22nd का आंसर. What is the answer of 22nd one? Biology या geography? What is the answer of 22nd? Biology या geography? चलिए guys, let's see. ओके ओके, नाउ ऐसा है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है. सो इट इज वेरी आई मीन सी, लड़की लड़के को ऐसा पूछती है कि मुझे याद है तब तक, यू चेंज योर माइंड एंड ऑप्टेड फॉर, लड़का ऐसा बोलता है चेंज माई माइंड एंड ऑप्टेड फॉर हिस्ट्री इंस्टेड. लड़के ने ऐसा बोला, और बाद में लड़का लड़की को ऐसा बोलता है जेन को कि मुझे याद है तब तक यू ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, मुझे याद है तब तक तूने बायोलॉजी लिया था. फिर जेन ऐसा बोलती है हाँ, लेकिन इसके पहले मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि ये लू या ज्योग्राफी लू, लेकिन उसने लिया तो एग्जैक्टली बायोलॉजी. But she was undecided between biology and geography. However, she opted for biology instead. So biology is going to be the right answer in 22nd. Any questions, any doubts in that, students? Do you want to listen this again? ये biology geography वाला थोड़ा सा देखना है वापस, क्योंकि काफी लोगों ने geography लिखा है. 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेगे वापस सुनते हैं. देखिए बहुत, यही मैं रिपीट करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग, बट दिस इज स्मॉल थिंग, आपको मजा आएगा. चलिए. When I'd run into you. Have you been here long? I arrived yesterday on Sunday. How about you? I got here a few days ago, on Saturday. No, wait a minute. What's today? Sorry, Friday, not Saturday. But we didn't have to be here till today. Yes, I know. But I wanted to get my things moved into my room and just take a look around. So, did you decide to do English in the end? No, I changed my mind and opted for history instead. Oh. And you're doing biology, if I remember correctly. Yes, although to start with, I couldn't decide between that and geography. क्लियर हो गया एवरीबॉडी? इज इट क्लियर नाउ? पहले उसने ऐसा बोला कि तूने बायोलॉजी लिया था, तो उसने यस बोला, बड़ा लंबा सा यस कहा, और उसके बाद उसने ऐसा कहा कि आई वाज नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन दैट एंड ज्योग्राफी, बट द आंसर इज गोइंग टू बी बायोलॉजी. अंडरस्टूड गाइस? ओके, चलिए. How much reading have you got?
I was given an amazingly long list of books to read. See? Wow, it does look pretty long. Well, I counted 57. I could hardly believe 23rd का आंसर क्या आएगा इसका? तो ये तो रोकड़ा मार के इसमें मिस नहीं होना चाहिए. 57 इसमें तो मिस ही नहीं होना चाहिए. This is gone. और 57 लिखना न्यूमेरिक में लिखना. There is no need to write in words, isn't it? Okay, great. चलिए आगे बढ़ेंगे. it. What's your list like? Well, it's not as long as yours, but it's still pretty big. There are 43. क्या आंसर आएगा 24 का? Answer is going to be 43. Very good. Is it getting clear? Very, very simple. Simple सा है. अगर किसी ने पहली बार भी किया है, I am trying to make sure that everybody is able to understand. So don't worry. Clear? Okay, चलिए. Now 25. Let's see what's the I answer. don't know how I'm going to get through them all. Well, you don't have to read them all this week. You just have to stay ahead of the lectures and seminars. Have you got your class schedule yet? Yep, it came with a reading list. When's your first lecture? Tuesday. How about you? The day after. It's my busiest day. चलिए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? उसने ऐसा बोला कि कब कब आपका लेक्चर है, तो उसने बोला कि ट्यूसडे, और उसने क्या बोला? द डे आफ्टर. तो डे आफ्टर लिख के मत आ जाना नियति. यू शुड नॉट बी राइटिंग डे आफ्टर. आपको लिखना पड़ेगा वेडनेसडे, और वेडनेसडे का स्पेलिंग जी रॉन्ग है आपका. सो आंसर इज गोइंग टू बी वेडनेसडे. WEDNESDAY. वेडनेसडे पूरा स्पेलिंग अच्छी तरह से लिखना जरूरी है. या आकांक्षा आपने, इफ इट इज गिवन, जस्ट अ मिनट. Yeah, you can write in numeric, not an issue. Clear? Okay. Any questions, any doubts, students? I hope you are enjoying. Great. Please sir, repeat which recording. कौन सा recording में repeat करूँ? Last वाला? Day after वाला? Do you want me to repeat the recording? Why? Is there a need of repeating me this, guys? Okay, छोटा सा है, मतलब ये day after उन्होंने ऐसा बोला कि the day after. Only 5 answers. Yes, only 5 answers. Which answers? Just a minute. देखिए मैं छोटा सा पीछे वाला करता हूँ. देखिए. What's your list like? Well, it's not as long as yours, but it's still pretty big. There are 43. I don't know how I'm going to get through them all. Well, you don't have to read them all this week. You just have to stay ahead of the lectures and seminars. Have you got your class schedule yet? Yep, it came with a reading list. When's your first lecture? Tuesday. How about you? The day after. It's my busiest day. I've got 2. Clear now? उसने ऐसा बोला the day after, isn't it? Exactly. So answer is going to be, now I hope it is clear. Clear? Day after का मतलब होता है Wednesday. Okay? हाँ. सिर्फ 3 वर्ड्स लिखा है तो भी आप 3 वर्ड्स के अंदर है. Clear? So you can write below 2 words or 1 word or a number, not an issue. 57 आप लिख सकते हो. Okay, great. Let's now do this. वापस करते हैं. Time is running out. तो मैं एक छोटी सी बहुत अच्छी सी चीज आपको सिखाना चाहूंगा. Just a minute. एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन सेक्शन नंबर 4th में. So let us see how you do this. चलिए ये बहुत अच्छा है. I am doing this table जो है 4th वाला थोड़ा सा अटपटा है. Let us see. We hope to give you a clear idea of what we offer in our training. Read the questions number 31, 32, 33, 34, 35. Not more than 3 words. शांति से देख लो. Now listen carefully to the lecture and answer questions 31 to 40. Welcome to Further Education Information Week. This is the Physical Education Faculty session, and I'm the head of the faculty. During the course of this morning, we hope to give you a clear idea of what we offer in our training programs, and we will look at the types of courses and the entry requirements, if any, for those courses. Some of these courses are open to school leavers, but for some, you need previous qualifications or relevant successful employment. So, firstly,
The Physical Fitness Instructors course is offered as a 6-month certificate course, which includes an important component of personal fitness, but there are no specific entry requirements. Okay, fine. Now यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है. Number one, you need to understand how they have written the answer. See, you can see how they have written 6-month certificate. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी अगर 4-month सर्टिफिकेट आता है, 1-month सर्टिफिकेट आता है, तो आपको भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा जिस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है. आई एम नॉट सेइंग इफ यू राइट इन another way or other way, it is going to be always marked as a wrong answer, but for safety purpose, if you want to make sure that you don't get the answers wrong, you need to imbibe, you didn't need to copy down how they have written this. See, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6 लिखा है, आप सारी चीज कैपिटल में लिखोगे वो बात अलग है, बाद में डेस किया हुआ है, देख सकते हो. सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट 6 months, एस नहीं लिखना है, 6-month सर्टिफिकेट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि इसी तरह से अगर आप बाकी के जैसे कि 31, 33, 35 है, तो उसमें भी आपको कोर्स के ड्यूरेशन ही लिखना है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कॉपी डाउन दिस थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये चीज. दूसरी, उन्होंने ऐसा बोला कि एंट्री रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने ऐसा बोला कि नो प्रायर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड. तो उन्होंने नो प्रायर क्वालिफिकेशंस के बदले देखो आपने लिखा है उन्होंने नन. तो इसका मतलब आपको ये आंखें आपकी खुली होनी चाहिए कि आप नो प्रायर क्वालिफिकेशंस लिख सकते हो व्हेनेवर देयर इज नो एंट्री रिक्वायरमेंट. लेकिन बेहतर ये होगा कि नो प्रायर क्वालिफिकेशंस में देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ यू कमिटिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स. क्वालिफिकेशंस में शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, प्रायर में क्वालिफिकेशन स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है. तो देखो उन्होंने सीधा नन लिख दिया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी नो प्रायर क्वालिफिकेशंस वो लोग बोलते हैं, यू कैन राइट नन. जैसे कि देखिए, मैं वापस थोड़ा सा रिवर्स करता हूं तो आपको पता चलेगा. देखो, नो प्रायर क्वालिफिकेशन, देखो, हाँ मैं प्ले करता हूं. Faculty session, and I'm the head of the faculty. During the course of this morning, we hope to give you a clear idea of what we offer in our training programs, and we will look at the types of courses and the entry requirements, if any, for those courses. Some of these courses are open to school leavers, but for some, you need previous qualifications or relevant successful employment. So, firstly, the Physical Fitness Instructors course is offered as a 6-month certificate course, which includes an important component of personal fitness, but there are no specific entry requirements. बट देयर आर नो स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स, जिसका आंसर उन्होंने लिखा है नन. तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आई शुड राइट नन, आई कैन राइट नन रादर व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट. लेट अस गो अहेड नाउ. 31 स्टार्ट करते हैं. For sports administrators, we provide a 4-month certificate course. Yes, what is the answer of 31st? Now, everybody, आपको पता चल जाना चाहिए. 4-month सर्टिफिकेट, फुल मंथ नहीं, 4-month सर्टिफिकेट आपको पूरा लिखना पड़ेगा. जिस हिसाब से उन्होंने 6-month सर्टिफिकेट लिखा है, उसी हिसाब से आप 4-month सर्टिफिकेट लिखोगे. सो विल बी हैविंग 4, बाद में डैश, बाद में मंथ और बाद में सर्टिफिकेट. इज इट गेटिंग क्लियर? आप बोलते हो सर मेरा लिसनिंग बहुत अच्छा गया. कितना अच्छा गया लिसनिंग, फिर भी 7.5 बैंड, सॉरी 6.5 बैंड आए. उसका कारण ये है कि इंस्ट्रक्शंस आप ठीक से पढ़ते नहीं हो. क्लियर? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीजें कैपिटल में लिखना है आपको. ओके, आगे बढ़ेंगे. 30 सेकंड का आंसर थोड़ा सा अटपटा है. लेट अस सी हाउ यू डू इट. But you should be aware that this is designed for those who are in employment. This employment must be current and related to sports administration. ओके, 33rd सेकंड का आंसर आ भी गया, आपको शायद पता नहीं चला. दिस कोर्स इज डिजाइन्ड फॉर दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट. आई रिपीट, उन्होंने ऐसा बोला. दिस कोर्स, पहले मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल, इट इज डिफिकल्ट वन. दिस कोर्स इज डिजाइन्ड फॉर दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, इन एम्प्लॉयमेंट. दिस एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी करंट एंड रिलेटेड टू द वर्क, ऐसा कुछ बोला. तो अब जरा देखो कि मैं क्या आंसर आएगा 30 सेकंड का. अब देखो जरा, व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी. मैंने पूरा आपको आपके सामने बोला है. अगर इन एम्प्लॉयमेंट लिखते हो, अगर इन एम्प्लॉयमेंट नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट राइट एक्सपीरियंस, यू नीड टू राइट एम्प्लॉय. आंसर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि अगर आप इन एम्प्लॉयमेंट लिखते हो, अगर आप इन एम्प्लॉयमेंट लिखते हो तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तो फिर ऐसा होगा in employment in sports administration, so it is grammatically going to be incorrect. So answer is only going to be employment.
I repeat, the answer of 32nd is going to be only employment. आपको और कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं, अपना घर का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यही बोला है उन्होंने, this course is designed for those who are in employment, full stop. This employment must be current and related to sports administration. So answer is going to be only employment. I hope this is clear to you, everybody. Clear or not? Sure? Very good. चलिए आगे. For the sports psychologist course, we offer a 1-year diploma course. 33rd. What is the answer of 33rd? 1 year diploma. तो 1 year diploma भी आप उसी तरह से लिखोगे जिस तरीके से उन्होंने 6 month certificate लिखा है. Is it getting clear? In employment wrong है मिरल. तो 32nd का आंसर 33rd का आंसर आएगा, या 33rd का आंसर आएगा, क्या आएगा? Answer is going to be 1 year diploma. Answer is going to be 1 year diploma. This is very very important. उसी तरह से आप लिखोगे आंसर. Clear? Okay. चलिए आगे बढ़ेंगे. But this diploma course is available only to those who already hold a degree in psychology. So you need to make sure you have that before you apply to do this course. Now, for physical education teachers, we offer a 4-year degree in education. This degree course is designed for preparing students to teach in primary and secondary schools and needs no prior qualifications. Presence of mind. Presence of mind. Presence of mind. Requires no prior qualification. बोला था मैंने पहले, तो आप नो प्रायर क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, लेकिन बेवकूफ़ी होगी अगर आप नो प्रायर क्वालिफिकेशन लिखोगे. आंसर इज ओनली गोइंग टू बी नन, NONE. अंडरस्टूड इन कैपिटल्स. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? तो देखो पहले की आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी काम लगती है यहाँ पे. इट हेल्प्स यू अ लॉट इन राइटिंग. और नन में तो गलती होने की संभावना ही नहीं है, नन का ऊपर स्पेलिंग भी लिखा है. इज इट गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? ओके ग्रेट. चलिए अब 35th आंसर बाकी रहा. As it is entered directly by school leavers. And lastly, for the recreation officers course, we offer a 6-month certificate. Entry to this course normally includes applicants of a wide range of ages and experience. चलिए ऊपर से कॉपी करना है आपको. ऊपर से जो है ना कॉपी, फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर, उसका ही तो डायरेक्टली कॉपी करना है 6 month सर्टिफिकेट, इजंट इट? उसी चीज में से कॉपी कीजिए ऊपर से और काम का काम बनाइए अपना. क्लियर एवरीबडी? यस और नो? 6 month सर्टिफिकेट. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? एंजॉयिंग लिसनिंग? एक और सेक्शंस मुझे करवाना था, बहुत अच्छा है सेक्शन. या वन मोर सेक्शन. डू यू वांट मी टू डू वन मोर सेक्शन? बहुत अच्छा है. लास्ट है, लास्ट 5 क्वेश्चंस है, लास्ट 5 क्वेश्चंस. चल वी गो हेड नाउ. चलिए लास्ट 5 क्वेश्चंस. और बहुत, ये इसकी जो टेक्निक देने वाला हूं ये बहुत अच्छी टेक्निक है. मैं चाहूंगा इस टेक्निक को आप ध्यान से सुने. जस्ट अ मिनट. हाँ ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए ये क्या है, जरा गौर कीजिए. क्वेश्चंस नंबर 36 to 40 में देखिए क्या करना है आपको. जस्ट गो थ्रू क्वेश्चंस नंबर 36 to 40. गो थ्रू इट. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसकी बहुत अच्छी टेक्निक सिखाने वाला हूं आपको. इसको हम कहेंगे यू नीड टू फाइंड आउट पिक फ्रॉम द लिस्ट. पिक फ्रॉम द लिस्ट है, इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन इट इज पिक फ्रॉम द लिस्ट एंड इट इज डिफिकल्ट वन. यहाँ पे दे आर गोइंग टू गिव द ब्रीफ आउट ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ जॉब्स. जैसे कि फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, उसका काम क्या है. स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका काम क्या है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, रिक्रिएशन ऑफिसर है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दे आर गोइंग टू गिव यू द ब्रीफ आउट कि ये लोग क्या करेंगे, और आपको क्या करना है, ये A to G में से आपको ऑप्शन सही ढूंढने हैं कि इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना चला जाएगा. तो ऐसे केस में हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 5. Very good. 5 questions. And against these 5 questions, how many options are given? How many options are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 options are given to you, isn't it? Very good. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 options are not going to be utilized. Clear? 2 ऑप्शन आपके काम के नहीं है. यहाँ पे आपको छोटा सा काम ये करना है. What you need to do is that whenever they start giving you the brief out of what the responsibilities of physical fitness instructor is,
You need to concentrate on first two lines. बहुत सारी चीजें बोलेंगे वो लोग, वापस दोहराना चाहूंगा, वो बहुत सारी चीजें बोलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पहली दो लाइन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपके आंसर्स मिलेंगे, वरना आंसर नहीं मिलेगा. दूसरी बात, नीचे के ऑप्शंस देख लो आप. ए, द कोचिंग ऑफ टीम्स. बी, द सपोर्ट ऑफ एलीट एथलीट्स. एलीट मतलब प्रोफेशनल. सी, गाइडेंस ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स. डी, कम्युनिटी हेल्थ. ई, द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज. ये पहले से देखना जरूरी है, आप इसको नहीं रीड करोगे तो चलेगा, क्योंकि जो लाइन सर आने वाला है फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर, लेकिन इसको रीड करना बहुत जरूरी है. डी, कम्युनिटी हेल्थ. ई, द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज. एफ, अरेंजिंग मैचेस एंड वेन्यूज. एंड जी, द राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. So you need to read this stuff, before you start, getting the answers. Let us see. And मैंने बताया वैसे you are going to concentrate on first two lines. This is very important. चलिए, let us see. But we do not insist on any prerequisites for this course. Remember that this is a vocational training institute. We train you so that you can take up a particular kind of job. So it is important that you know the main roles of the jobs, what the work is like, and what kind of qualities you need to succeed at them. A physical fitness instructor works in health and fitness centres, preparing individual programs for ordinary members of the public. Preparing individual programs for ordinary members of the public. Preparing individual programs for ordinary members of the public. पहली दो लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो. तो देखो A to G में कौन सा लग रहा है स्ट्रेट फॉर फर्स्ट क्लास. देखो C. वेरी गुड. आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी C. C को बाजू में रख दो. आंसर ऑफ 36 इज गोइंग टू बी C. आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फर्स्ट टू लाइंस. अभी भी वो लोग बोलेंगे, लेकिन आपने पहली दो लाइन पे कॉन्सेंट्रेट किया. देखो अभी तो उसकी चालू है डेफिनेशन. Physical fitness instructors prepare routines of exercises to suit the individual client's age and level of fitness. Sports administrators. अब आपको पता चला कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बोलने वाले हैं. Now concentrate on the first two lines. Run clubs and sporting associations. Their duties include such things as booking playing fields with local councils and organising the schedule of games or events for the club. Booking, organizing, scheduling. Booking, organizing, scheduling. अब देखो A to F में, A to G में से कौन सा है, शांति से देखो. Booking, organizing, scheduling. ये कहाँ पे आता है? सिर्फ और सिर्फ देखो पहली दो लाइन में कॉन्सेंट्रेट किया. आंसर इज गोइंग टू बी F. अंडरस्टूड एवरीबडी? आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी F. वेरी गुड. सो 36 का आंसर C है, 37 का आंसर है F. लेट अस सी. So they need good organisational skills. Sports psychologists spend time with professional athletes. आ गया मेरा आंसर. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट स्पेंड टाइम फॉर प्रोफेशनल एथलीट्स. मैंने बोला था आपको कि पहली लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो. तो प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए कौन सा है? B इज द राइट आंसर. तो 38 का आंसर होगा B फॉर बॉम्बे. एग्जैक्टली. अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ेंगे. Helping them approach competition with a positive mental attitude to enable them to achieve their personal best. They do this by improving motivation and concentration, or assisting with stress management. आपने देखा कितनी सारी चीजें उन्होंने बोली, लेकिन पीछे की जो भी चीजें उससे इसमें से किसी का भी आंसर नहीं आएगा. देखो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरीबडी, द आंसर हैज स्टिल नॉट कम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट पहली दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी की सारी जो लाइन उन्होंने बोली है वो उससे हमारे आंसर्स कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं. क्लियर? ओके. Physical education or PE teachers. अब मेरी बात सुनिए, जब ये लोग शॉर्ट फॉर्म्स बोलेंगे जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर और पीई टीचर, तो याद रखना पड़ेगा कि शायद अब फिजिकल एजुकेशन टीचर को पीई भी बोलेंगे. तो आप ऐसा मत सोचना सर ये पीई कहां से आ गया. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसी का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बोला हुआ है. अंडरस्टूड? सो नाउ दे आर गोइंग टू स्पीक अबाउट फिजिकल फिटनेस एजुकेशन टीचर. Instruct young students in how to exercise, play sport and यंग स्टूडेंट्स. यंग स्टूडेंट्स देखो तो कौन सा आएगा सब में? यंग कौन सा है? देखो तो जरा A to G में यंग कौन सा है? गौर से देखो. यंग सबसे यंग. एग्जैक्टली. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी G. सो 39 का आंसर आएगा आपका G. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ेंगे.
do other recreational activities correctly and safely. PE teachers help the development of coordination, balance, posture and flexibility, with things like simple catching and throwing skills. They are not expected to be experts in all sports, but must be able to show students the basic techniques involved in a wide range of activities. Recreation officers often find themselves working for local government authorities and local groups. बस मेरे लिए तो यही लाइन काफी है, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज और लोकल ग्रुप्स. उसके बाद उसको जो बोलना है बोले, लेकिन लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज और लोकल ग्रुप. तो लोकल के लिए देखो काफी ऑप्शंस भी चले गए हैं. तो लोकल के लिए है कम्युनिटी हेल्थ, इजंट इट? आंसर ऑफ 40 इज गोइंग टू बी डी फॉर दिल्ली. बोलिए, और कोई क्वेरीज हो तो बताए. क्लियर हो गया? वी आर ऑलमोस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ. टाइम हो गया है और सेशन भी हो गया है. बोलिए, डिड यू एंजॉय द लिसनिंग? ओके, ग्रेट. काफी क्लियर हुआ? या एवरी टाइम यू कैन यूटिलाइज दिस. या डिड यू एंजॉय? या वेरी गुड. ओके, क्लियर. थैंक यू, थैंक यू. या विल शेयर द रिकॉर्डिंग. आप इस रिकॉर्डिंग को भी वापस दे ले सकते हो. आई विल बी पुटिंग दिस रिकॉर्डिंग टुमारो. या श्योर श्योर श्योर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. अब इसको प्रैक्टिस कीजिए लिसनिंग में, तो इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे. यू विल बी गेटिंग दिस थिंग्स क्लियर. डोंट वरी. क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. यू नीड टू राइट एवरीथिंग इन कैपिटल्स. आप कैपिटल्स में लिख सकते हो. ये बुक में भी अवेलेबल है और ये इसका रिकॉर्डिंग में मैं दे दूंगा आपको कल. सो डोंट वरी. क्लियर? थैंक यू सो मच. ग्रेट. थैंक यू स्टूडेंट्स. गुड नाइट.